A very good morning, children. The first part of chapter 14, the national movement, we have completed, and we have completed up to Lucknow Pact. So the next topic we will start with is arrival of Gandhiji in nationalist movement. Then we will discuss about various acts passed by the British government after 1915. Then we will discuss about non-cooperation movement, civil disobedience movement, and the role of revolutionaries. So let us start with arrival of Gandhiji in freedom movement of India. It was in 1915 Gandhiji arrived in India, and when he arrived in India he had already become a very famous name because of his fight against the white people in South Africa. So he followed a technique, and that was satyagraha. He propagated three things: tolerance, brotherhood, and non-violence. He established Sabarmati Ashram, and that was established in Gujarat near Ahmedabad. He started his first movement from Champaran, Bihar, and by 1919 Gandhiji had already become a popular name in India. The next topic we are going to discuss about is passing of Government of India Act of 1919 or the Montagu-Chelmsford reforms of 1919. The main objective of this act was to appease the people of India. By this the British government introduced diarchy. Now what is diarchy? Double government. दो तरह की गवर्नमेंट जिसमें मेन पावर ब्रिटिश के हाथ में रहा और लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है इंडियंस को दिया गया. इसका मतलब है जैसे फाइनेंस, पुलिस, जो पावर है ये पावर जो है गवर्नर के पास था. गवर्नर ब्रिटिश पर्सनल थे, और जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा था, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर नहीं है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है इंडियन मिनिस्टर्स को दिया गया. सो पीपल ऑफ इंडिया वर नॉट सेटिस्फाइड बाय द एक्ट ऑफ 1919. In between, another act was passed, and that was Rowlatt Act. This act was passed in the same year, that was 1919, and it was passed to consolidate the British control over India. ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अपने कब्जे को और पुख्ता करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक और एक्ट पास किया. इस एक्ट के तहत anyone can be arrested एनी टाइम विदाउट एनी रीजन. ऐसा कोई अरेस्ट होता है, लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा एक्ट पास किया बाय विच कोई भी कभी भी अरेस्ट हो सकता है. सो इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट एज ब्लैक लॉ. देयर वर मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट दिस ब्लैक लॉ. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वाज जलियनवाला बाग मैसेकर, जिसके बारे में आपने सुना होगा. On 13th April 1919, on the day of Baisakhi, people gathered in Jallianwala Bagh. मतलब एक गार्डन था जिसका नाम था जलियनवाला. The people gathered there. This garden is near Golden Temple in Amritsar, and they gathered there to celebrate Baisakhi, and they also wanted to have a peaceful protest against the arrest of two important leaders from Punjab, Dr. Satyapal and Saifuddin Kichle. General Dyer, who was in charge of Punjab then, he ordered for an open fire, and thousands of innocent men, women, children were killed. So this created a great shock among Indians. Now we will discuss about the starting of non-cooperation movement. Why Gandhiji started the non-cooperation movement? Because there were so many injustices done by the Britishers. The passing of the Government of India Act of 1919, the passing of Rowlatt Act, the Jallianwala Bagh massacre, all this led Gandhiji to decide to start for mass movement. So Gandhiji was ready for a mass movement. The World War has ended in 1919, and now Gandhiji was ready to start a mass movement. In between, a movement was started by Muslims, and that came to be known as Khilafat movement.
Now Khilafat movement was started by two brothers. They were known as Shaukat Ali and Muhammad Ali. These two Ali brothers started Khilafat movement because they wanted to support the Khalifa of Turkey. Turkey एक country था which was defeated by Britishers, and British wanted to depose the Khalifa of Turkey. Khalifa कौन? जो मुस्लिम्स के रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड थे. So when the British wanted to depose the Khalifa of Turkey and impose harsh agreements on Turkey, so the Muslims of India started a movement to support the Muslims of Turkey, and this movement was started against Britishers. Gandhi ji wanted the support of Muslims, so he supported Ali brothers, and Ali brothers supported the non-cooperation movement. So in this way, non-cooperation movement started with the cooperation of Hindus and Muslims. So it was in Nagpur session of Congress. It was in December 1920. A resolution was passed, and that resolution came to be known as non-cooperation movement resolution, by which it was decided that India was to start a movement against the Britishers. What were the main features of the non-cooperation movement? The first thing was to renounce the titles. जो titles Britishers ने Indians को दिया था वो वापस देना है उनको. कोई भी टाइटल उनसे दिया हुआ रखना नहीं है. So that was a way to oppose the Britishers. क्योंकि गांधी जी ने कहा था जब तक हम चुपचाप ब्रिटिशर्स के एक्सप्लोटेशन सहेंगे, हम उनको कोऑपरेट करेंगे, तब तक ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करेंगे. The day we will start non-cooperation, they had to leave India. इसीलिए non-cooperation movement शुरू हुआ. Boycott the legislature. British government की जो legislature है उसके काम काज में भाग नहीं लेना है. Boycott schools and colleges. जो schools colleges वो जाते थे वो नहीं जाएंगे to protest against Britishers. Bonfire of foreign goods. जितने भी foreign goods है उसको जला दिया जाएगा. They were not to be used क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत पैसा कमाते थे अपने सामान बेच के. So that was to be done. Opening of Jamia Millia. मुस्लिम्स ने एक यूनिवर्सिटी शुरू किया कि अब हम ब्रिटिश स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अपना इंस्टीट्यूशन होगा. सो दैट वाज जामिया मिलिया. उस बाद में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना. अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है. काशी विद्यापीठ जिसका नाम अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो भी बनाया गया. सो दिस वाज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. तो ये जो दोनों बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ओपन हुए दैट वाज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स अपने क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू अपने रिलीजन को स्प्रेड करना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चाहते थे. सो इसीलिए ये दो अपना इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ. बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस. ब्रिटिश ऑफिसेस भी ज्वाइन नहीं करेंगे. सो ये था मेन फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो दिस वाज हाउ द मूवमेंट कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट इट वाज ऑन 5 फरवरी 1920 दिसंबर में पास हुआ. 21 पूरा चला और 22 फरवरी 1922 फरवरी 5 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्थगित किया. नाउ व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? इट वाज इन चौरी चौरा. चौरी चौरा एक प्लेस का नाम है जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है. यूपी की गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चौरी चौरा. इन दिस प्लेस 22 policemen were burnt alive. किसने जलाया? The crowd, the angry mob. गांधी जी चाहते थे अहिंसा में लोग मूवमेंट करें, लेकिन लोग गुस्से हो गए और with the crowd in anger they set a police station on fire, and that was an incident of violence. When Gandhi ji came to know this, he was very much shocked and he suspended the movement. गांधी जी ने मूवमेंट को तुरंत बंद किया. और उस टाइम में दो और लीडर थे. मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे एंड चित्तरंजन दास. दे फॉर्म स्वराज पार्टी. उन्होंने एक और पार्टी बनाया एंड दैट वाज स्वराज पार्टी एंड दैट वाज टू फाइट फॉर स्वराज. सो दिस वाज अबाउट द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन movement.
The next topic we are going to start is the peasants movement started in India. In various parts of India, the peasants also started movement. One example is being given that it was Sardar Vallabhbhai Patel who led the peasants movement in Bardoli. Now, why the peasants started a movement against the Britishers? Because they wanted to oppose the British exploitation. So they started the movement in various parts of India. Now the next topic we are going to discuss about is Simon Commission. A commission was set up by the British government in 1927 in London, and this was under the chairmanship of Sir John Simon. इसीलिए इसका नाम हुआ Simon Commission. This commission was set up in London. इसकी ऑब्जेक्टिव क्या था? To suggest reforms. क्यों? To appease Indians. क्योंकि Indians protest करते थे. They wanted that British should leave India. तो Britishers wanted to pacify Indians by just showing that वो भी Indians के लिए concerned है, वो कुछ reforms लाना चाहते हैं. तो इस कमीशन में कितने मेंबर्स थे? There were 7 members, but all 7 members were from England. There were no Indian members, all were British members. So Indians were very much angry because they told, if a commission which consists of all English members, all British members sitting in London, how it can solve the problems of Indians? The commission should have Indian members. But the commission reached India in the year 1928. Indians protested with the slogan, "Go back, Simon." So this is how Simon Commission was protested, and there was widespread, protest and rallies against this commission. Next we will discuss about the next important event we are going to discuss about is Lahore session of Congress. हर साल कांग्रेस के सेशंस होते थे, मतलब मीटिंग्स होते थे. तो लाहौर में एक मीटिंग हुआ जिसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है. सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक वी आर डिस्कसिंग. ये कब हुआ? December 1929. In December 1929, Congress means Indian National Congress, the political organization. It had, which was fighting against British. It had a session, and this was presided over by Pandit Jawaharlal Nehru. 1929 दिसंबर में लाहौर में जो सेशन हुआ उसको प्रिजाइड किसने किया था? इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. इस सेशन में 2 इम्पोर्टेंट डिसीजंस पास हुए. व्हाट वर द 2 इम्पोर्टेंट डिसीजंस? The first one was Purna Swaraj resolution was passed. Now, what was Purna Swaraj resolution? Purna Swaraj means complete independence. Now, Indians did not want to get satisfied with a little bit, what the British were giving. They wanted complete independence. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया, अब ब्रिटिश के सामने उनका एक ही डिमांड रहेगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. इट मीन्स ब्रिटिश शुड लीव इंडिया. Now the second one was the most important resolution. 26 जनवरी, क्योंकि ये सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में. सो 1930 26 जनवरी को ये डिसाइड किया गया कि दिस डे वाज टू बी ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे. एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि हमारे इंडिपेंडेंस तो 1947 में हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1930 को कैसे इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया? डेफिनेटली इट वाज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और 1930 26 जनवरी onwards till 1947 this day was observed as Independence Day. The real independence came on 15th अगस्त, तो हम तो 15 अगस्त को मनाएंगे. तो उस डे के सिग्निफिकेंस को रखने के लिए बाद में 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के नाम से मनाया गया. सो दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे 26 जनवरी. So that was the significance of Lahore session. In the next class, we will discuss about civil disobedience movement. Till then, bye bye.